Hello. So I'm looking for a day low break from here. Stop loss, this green candle, which is probably 935. The high is 970, and the RR is really bad because the reward is only 40 points and the risk is almost 100 points. So I'll probably look for a scalp sell. If this candle comes around VWAP, I'll look for a sell. Otherwise, I won't. Right now, it is not at VWAP. It is below. VWAP is around 900. If that comes around VWAP, I'll look for a sell. Otherwise, I won't. I probably would skip this trade. But I think Nifty should trade day low. Again, the stop loss is this candle high. निफ्टी में मैं स्कैल्प सेल ढूंढ रहा हूँ, बट रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है क्योंकि रिस्क 100 पॉइंट्स का है और रिवॉर्ड सिर्फ 40 पॉइंट्स का है. तो मैं कुछ देखता हूँ कि अगर निफ्टी अगर वीवैप आता है तो मैं उसको वीवैप के आसपास बेचूँ ताकि रिस्क मेरा सिर्फ 70 पॉइंट्स रहे और फिर रिवॉर्ड भी मेरा 70 पॉइंट्स रहे. पर मैं यहाँ पर बाय करने के लिए नहीं देखूँगा और प्रेफर करूँगा ऑप्शन सेलिंग क्योंकि आज वेडनेसडे भी है तो प्रीमियम डीके हो सकता है. बैंक में आई एम नॉट वेरी बुलिश. आई एम sideways to bearish in bank, expecting bank also to break day low, but I'll probably only look for scalp sell trades in Nifty. Thank you.